So here the next principle is the learning curve theory, and it states that when many items are produced or tasks are performed repetitively, the unit cost of those items decreases in a regular pattern as more units are produced. जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करते हो तो फर्स्ट टाइम जो आपकी कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप उसी प्रोडक्ट को डेवलप करोगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम. सो जितने यूनिट्स आप मज़ीद प्रोड्यूस करोगे उतनी ही कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी. सो दिस इज़ कॉल्ड द लर्निंग कर्व थ्योरी. So the next type of principle is called the reserves, and reserves are basically that amount or dollars included in cost estimate to mitigate cost risk by allowing for future situations that are difficult to predict or handle. So जब किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस पे काम किया जाता है तो उस कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस में कुछ कॉस्ट जो है वो रिजर्व की जाती है फॉर द फ्यूचर सिचुएशंस. जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह के कॉस्ट रिलेटेड रिस्क की, सो अगर कोई रिस्क अराइज हो जाता है तो दैट इज़ सम एबनॉर्मल सिचुएशन जिसको आपने मैनेज करना है, जिसको आपने हैंडल करना है. सो उसकी मैनेजमेंट, उसकी कंट्रोलिंग और उसकी हैंडलिंग पे जो आपके एडिशनल अमाउंट लगेगा दैट विल बी हैंडल्ड थ्रू द रिजर्व्स. सो इसमें यहाँ पे दो तरह के रिजर्व्स हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स एंड द मैनेजमेंट रिजर्व्स. So the contingency reserves allow for future situations that may be partially planned for, sometimes it called known or sometimes unknowns, and are including the project cost baseline. Just like इसकी एग्जांपल हम इसी तरह से लेंगे, recruiting and training cost for expected personal turnover during a project. Let's suppose अगर आपके प्रोजेक्ट में इस रिस्क का अंदेशा है कि जो आपकी डेवलपमेंट टीम है या जो आपकी भी ओवरऑल टीम है उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो फिर इस रिस्क को निपटने के लिए जो नया स्टाफ, जो नए लोग हायर किए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होगी, रिक्रूटिंग कॉस्ट होगी बेसिकली, वो दैट इज़ कॉल्ड, दैट विल बी हैंडल्ड थ्रू द कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स. सो नाउ विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट रिजर्व्स and the difference between the management reserves and the contingency reserves. The contingency reserves is used to manage the identified risks, while the management reserves is used for the unidentified risks. हम ये कह सकते हैं कि जो contingency reserves जो होते हैं वो estimated figures होते हैं, while the management reserves is basically a small percentage of the cost or duration for the project. So ये कुछ बेसिक टाइप्स थी कॉस्ट की और बेसिक प्रिंसिपल्स थे. अब हम देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ cost estimation process. So cost estimation is basically, we can say, after developing good resource requirements list, project manager and team must develop several estimates of the cost for these resources. Requirements list को डिफाइन करने के बाद, डेवलप करने के बाद, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप वो परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर दोज रिसोर्सेज, फॉर दोज रिक्वायरमेंट्स लिस्ट. अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो भी हम प्रॉपर एस्टिमेट्स लगाएंगे उन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फिर हमने उसी बजट में रहते हुए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कंप्लीट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, मैनेज करना है. सो यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है हमें कि डिफरेंट तरह के जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए. हाउ टू प्रिपेयर दोज कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड व्हाट आर द टिपिकल प्रॉब्लम्स associated with the cost estimates. First type of cost estimation is the rough order of magnitude. So a rough order of magnitude estimates provides an estimate of what a project will cost. So ये estimate जो है ये early in the project life cycle हम इसको perform करते हैं. Normally 3 या 4 साल project की completion से पहले हम रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड कॉस्ट एस्टिमेशन जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं. और वी कैन से टू इवन बिफोर अ प्रोजेक्ट इज़ ऑफिशियली स्टार्टेड टू हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर्स मेक प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजंस. और इसकी एक्यूरेसी हम कह सकते हैं इट वुड बी -50% टू +100%, मीन्स दैट प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट वुड बी, यू कैन से 50% बिलो टू दैट रफ ऑर्डर एस्टिमेट और 100% अबव टू दैट रफ ऑर्डर एस्टिमेट्स.
So we can say the rough order of magnitude is basically the similar project cost in the past. It is basically the first estimate in the life cycle of a project, usually during the project selection and approval period. Basically, a budgetary estimate is used to allocate money into an organization's budget. It is the approximation of the cost of an activity, job, program, or a project prepared for budgeting and planning purposes only. It just represents the budget for the understanding of the scope and expense of what needs to be done. So the budgetary estimates are made 1 to 2 years prior to the project completion. So the accuracy of budgetary estimate is typically 10% to plus 25%, minus 10% to plus 25%. So the next type of cost estimate is the definitive estimates, and it provides an accurate estimate of project cost. It is basically the most accurate type of the amongst the three types of cost estimation. हम ये भी कह सकते हैं it is the best estimate with the least variance according to the given scope, quality and time. बेसिकली जो डेफिनेटिव एस्टिमेट्स होते हैं ये परचेजिंग डिसीजंस के लिए लगाए जाते हैं, जिनके लिए हमें एक्यूरेट एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट में अगर 1000 पर्सनल कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं और किसी आउटसाइड सप्लायर से हमें, तो इसके लिए हमें एक डेफिनेटिव एस्टिमेट चाहिए सो दैट कि उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वी कैन पे टू द चूजन सप्लायर. And basically the definitive estimates are made 1 year or less prior to the project completion. और इसकी जो basically accuracy range होती है that is normally 5%, minus 5% to plus 10%. So we can say that it is important to provide the supporting details just like your assumptions, project scopes, work breakdown structure used to compute the estimates so that it will be easier to prepare the updates as needed or similar estimates on other projects. तो ये थी हमारी 3 टाइप्स जो हमने देखी कि अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट के कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो हमारे पास जो 3 मेथड्स हमने देखे उनमें नंबर 1 था हमारे पास रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नंबर 2 हमने देखा बजटरी एस्टिमेट्स और नंबर 3 डेफिनेटिव एस्टिमेट्स. सो वी विल सी द टास्क फॉर दिस वीक. है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि वी हैव टू डिस्कस why many information technology professionals have a poor attitude towards the project cost management and how this attitude might affect the poor track record of the completing the projects within the budget. क्यों हमारे IT professionals का attitude towards the cost management is very poor and किस तरह से ये जो attitude है, ये negative attitude है, हमारे projects की completion within the budget जो है उसको affect करता है, ये आपने इसको highlight करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये बताएंगे कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कॉस्ट बजटिंग प्रोसेस. इन डिटेल आप बताएंगे कि कॉस्ट बजटिंग प्रोसेस में क्या होता है और इस प्रोसेस को कैसे हम परफॉर्म करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक नंबर 8 लेक्चर. इंशाल्लाह इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में. थैंक यू.